Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to start chapter number 6, titled as Weathering the Storm in Ersama by Harsh Mande. So as you all know that we have already started this chapter in our previous video, that is the part 1. So today we are going to start the part 2 of this particular chapter. So as you all know that we have all discussed about the disaster, about the cyclone that was happened with Prashant and his family and his friend's family also. So here in this chapter the one main character is Prashant. So basically Prashant और उसके friends की family और प्रशांत की family, ये जो storm है जो इरसामा में हुआ था उड़ीसा में, वो ये फेस कर रहे थे, राइट। जो साइक्लोन वो लोग फेस कर रहे थे, ये एक डिज़ास्टर है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो लोग वो फेस कर रहे थे दैट टाइम। और वो उन्हें किस तरीके से उनको रिकवर किया, क्योर हुए। सो व्हेन द साइक्लोन वाज सीज्ड, राइट, नॉट फुली बट पार्शली, अगर वो सीज हुई थी तो दैट टाइम प्रशांत वॉज वेरी मच डिटरमाइंड एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया था दैट ही वॉन्ट्स टू गो टू हिज फैमिली टू सी दैम कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। As they waded through the waters, the sea. So, when Prashant went to his home, right? तो उसे on his way, he met two friends of his uncle, right? So उसने उन्हीं के साथ पे अपनी journey complete करने की सोची थी. So as they, so here they means Prashant and his friends, uncle's friends. All right. So waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macbri. So here the macbri means fires. Alright, fires means होता है बहुत frightful. क्लियर है, बहुत भयानक जिसे हम कहते हैं। सो जो भी वो सीन विटनेस्ड कर रहे थे, देख रहे थे, दैट वॉज सो फायरफुल, सो फ्राइटेंड, दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, विमेन, चिल्ड्रन, द कार्केसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल that the current swept against them as they moved ahead. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे ना, तो they saw so many human bodies like man, women and children's की, as well as वो कुछ carcasses means animals dead bodies. So वो भी वो देख रहे थे, goat, cattle and dogs and all. So वो slowly उन सबको aside कर रहे थे and they all floated in the water. So it was a very pathetic situation और very huge feeling that time उन्होंने face करी होगी, Prashant and his uncle's friend. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. So जैसे ही प्रशांत अपने घर पे पहुंचा, गांव में पहुंचा, वहाँ पे कोई घर नहीं था, पहली कोई घर वहाँ पे नजर आ रहा था। सो ये सब चीज़ें देख के प्रशांत बहुत ज़ोर से रोने लग गया। ओके, सो ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मीन्स डिवास्टेशन। जो डिवास्टेशन हुआ था, जो ये आपदा आई थी, आपत्ति आई थी, इस कंडीशन को ही थॉट कि हिज फैमिली कुडंट सर्वाइव्ड इन दिस डिवास्टेशन। Eventually, Prashant reached his village, Kalikut. So remember, Prashant's village name is Kalikut. When he reached his village, Kalikut, his heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Remnants means relics, left over. Means whatever our belongings जो होती है उसके कुछ पार्शल बच गए थे, जिसे हम अवशेष कहते हैं। So जो भी चीज़ें थी, घर तो कुछ नहीं था, कुछ केवल remnants बच गए थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted. Mangled and twisted means they just tugged each other and just tangled each other, and they all the belongings वह hang on the branches of the trees, just visible above the dark waters। और जो इसमें दिख रही थी बहुत डार्क वाटर जो था उसमें clearly visible थी। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. So हर जगह एक Red Cross shelter होता है। So in his village there are also one Red Cross shelter. So he went there and to see his family कि if
अगर कोई चांसेस है तो शायद उसकी फैमिली वहाँ पे उसको मिल जाए. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Maternal grandmother means Nani. So, first person he saw in the crowd, that was his grandmother, his Nani, weak with hunger. She rushed to him. So she was looking very feeble, very weak because of hunger, and she just rushed towards him, and her hands outstretches, like hands outstretches to hug हर ग्रैंडसन. सो उनकी जो ग्रैंड मदर है अपने ग्रैंडसन को हक करने के लिए जस्ट वो राष्ट्र करती हैं. हर आइज ब्रिमिंग, ब्रिमिंग मीन्स शाइनिंग. It was a miracle. So she said that it was a miracle. They had long given up for dead. So means they all thought means who they hear, Prashant's family. So they thought कि Prashant is no more. तो जब उन्होंने प्रशांत को देखा, so she was very very happy. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him in tightened relief. So suddenly जैसे ही आवाज़ आती है, आवाज़ें आने लगती हैं, तो suddenly प्रशांत सौ कि उसकी सारी फैमिलीज के आसपास गैदर हो गई थी. प्रशांत anxiously scanned the motley. Motley means desperate, bad in appearance or character, right? So बैटर्ड ग्रुप. सो वो बहुत एंशियस था, बहुत क्यूरियस था. वो देख रहा था, स्कैन कर रहा था, मतलब पूरी कॉपी कर रहा था कि सब लोग कितने डिस्परेटली उसको देख रहे हैं और सब कितने डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. सब हर कोई वहाँ पे उसको दिखाई दे रहा था. So, by the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. तो फाइनली बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिसाइड कि कब तक वो सेम ग्रीफ में रहेगा. सो ही थॉट कि आई एम द वेरी यंग पर्सन, तो मुझे गेट रिड होना पड़ेगा जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, सफरिंग्स है. ही सेंस्ड अ डेडली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. 86 lives were lost in the village. So he sense means he feel other problems, other grief कि हमने अराउंड 2500 क्राउड था वहाँ पर, शेल्टर थे, लोग रह रहे थे, एंड दे ऑल वर वेरी वरिड, दे ऑल वर वेरी दे ऑल इन ग्रीफ, दे ऑल वर इन ग्रीफ. सो प्रशांत उन सब चीज़ों को फील कर पा रहा था. 86 lives वर लॉस्ट इन द विलेज. तो क्वेश्चन बेसिकली इस पर बन सकता है कि हाउ मेनी लाइव्स लॉस्ट in that storm or in that natural disaster. So the answer is the 86 lives. कितने lives उन्होंने lost की थी? 86. All the 96 houses has been washed away. So it was a very drastic cyclone happened that time. वहाँ पे जितने भी कुछ 96 अराउंड होम थे वो सब washed away हो चुके थे, खत्म हो चुके, ruined हो चुके थे. It was their 40 day at the shelter. सॉरी 4th डे एट द शेल्टर. सो अब कौन सा डे उनको शेल्टर में था? 4th डे वो शेल्टर में थे. सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स. अब देखो कब तक वो ग्रीन कोकोनट्स पे सर्वाइव करते, राइट? एक एंड होता है हर चीज़ का. बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ people. अब देखो ट्यूमल्ट ऑफ पीपल मीन्स अप्रोर ऑफ डिसऑर्डरली क्राउड, टू मच पीपल देयर, राइट? अब बहुत ज़्यादा जब गैदरिंग होती है पीपल की, तो इट वॉज अ लाइक वेरी फ्यू थिंग्स दैट जो वो कोकोनट से सर्वाइव कर रहे हैं. ऑल राइट. सो प्रशांत ऑल ऑफ 19 years, तो प्रशांत एज इज 19 years old, ही वॉज 19 years old that time, decided to step in as leader of his village. तो at last he decided that he step forward and वो एक लीडर बनेगा अपने ही गांव का. इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई नहीं कर रहा है तो he did at least. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rights. So once again it means already merchant ने कुछ help करी होगी. Merchant means जो व्यापारी होते हैं, ठीक है? तो उन्होंने ऑलरेडी कुछ फूड से राइट हेल्प करी होगी. तो वंस अगेन प्रशांत हैज had made two groups. One is youth group and the other is elders group. So only a group, only one group, youth and elders का एक jointly group बनाया. All right, two groups नहीं बनाया, दो jointly group बनाया. And that group pressurized the merchant कि एक बार फिर से वो राइस से थोड़ी उनकी हेल्प करें. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड. डेलीगेशन मीन्स जो भी उनका ग्रुप था, जो प्रेसिडेंट थे उनके ग्रुप के, जो पर्सन्स थे, सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली. ट्रायम्फेंट मतलब जीत कर आए, मतलब उनको राइस मिल गया, उनको जो फूड था, अनाज था, दे गॉट.
wading through the receding waters with food for the entire shelter. तो फाइनली दे ऑल सक्सीड कि वो फूड लेकर आ गए इतने पानी में और शेल्टर तक उन्होंने पहुंचा दिया. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग. सो सी इफ वी डोंट हैव फूड दैट when we need food or when we are too much hungry, that time we didn't care about the food is rotten or food is not tasty. We just eat food, we need food, that's it. तो सेम थिंग हैपन विद दैम कि उन्होंने कोई ने फ़र्क नहीं करा, किसी ने परवाह नहीं करी कि ऑलरेडी जो राइस है वो रोटन है, तो बट वो उन्होंने खा लिया, एंजॉय किया. सो ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू द light a reluctant means loth, right, a slow fire on which to cook the rice. अब देखो जो गैदर्ड हुए थे, जो टूट के जो ट्रीज वगैरह गिरे थे वो सफिशिएंट नहीं थे, ठीक है. आप कह सकते हो डिल्यूट मीन जब किसी चीज़ को हम अनविलिंगली कर रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है किसी चीज़ को करने की, तो वैसे ही जो वो गैदर्ड किए थे ट्रीज वो रिल्यूक्टेंट थे क्योंकि ऑलरेडी गिरे थे. अब उनको फायर लगाना इट्स लाइक अ वेरी टफ टास्क. तो इन्होंने फिर भी किया, उस पर ही क्या करें, उन्होंने राइस कुक किए. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट the cyclone shelter were able to fill their bellies. So for the very first time they all eat rice and they felt कि first time उनकी bellies full हुई है, मतलब bellies means पेट, stomach full हुआ है. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter to filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend means होता है soft. To tend means cure to the wounds and fractures of many who has been injured. तो finally प्रशांत did something very good, food का उन्होंने arrangement कर लिया था. But next thing is कि he wants to organize a team of youth volunteers. And why he want to organize that kind of team? Because that team could clean the shelter of filth, urine, जो भी वॉमिट से फुल हो गया था, जो भी डेड बॉडीज फ्लोट कर रही थी इनटू द वाटर, सो उसको सबको क्लीन करे. एंड इफ समबडी इंजर्ड, राइट, सम फील फ्रैक्चर्ड एंड जो भी वुंड्स हैं उसको हील करने का काम करे. तो ये सब यंग पीपल मिलकर ये सारे काम करें. So on the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. If it then did not return, the youth task force gathered empty utensils from the shelter. So basically क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो फूड पार्सल था, राइट, 5th डे पे सॉरी, मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया एक, उन्होंने कुछ ड्रॉप किए फूड पार्सल जो भी साइक्लोन से सफर्ड पीपल थे उनको. बट नेक्स्ट डे दे डिडंट रिटर्न. अब जब वो नहीं आए तो यूथ ने क्या किया, फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, मतलब गैदर्ड के कुछ एम्प्टी जो यूटेंसिल्स होते हैं वो उन्होंने गैदर करने की कोशिश करी. देन दे डिप्यूटेड मीन्स एम्प्लॉयड, बच्चों को काम पे लगाया, राइट, द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक. सो जहाँ पानी नहीं था उन बच्चों को बोला कि आप यहाँ पे लेट जाओ, और उनके पेट पर क्या रख दिए गए, देखो आपको पिक्चर्स गिवन है, उनके पेट पे इस तरीके से यूटेंसिल्स मतलब खाली बर्तन रख दिए गए. सो दिस इज अ सिंबल दैट दे वर हंग्री, राइट. सो बेसिकली वो ये देखकर, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर से ये देखकर वापस आए एंड गिव सम एक्स्ट्रा फूड फॉर देम, और रेगुलर बेसिस पे फूड उनको प्रोवाइड करवाएं. सो बेसिकली ये करने का मोटिव यही था, to communicate to the passing helicopters that they were hungry. So the message got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food एंड अदर बेसिक नीड्स. तो बेसिकली क्या हुआ कि अब इसके बाद से मीन्स व्हेन दे डिड दैट थिंग, और ये जब यूटेंसिल्स वगैरह रखे उसके बाद से रेगुलर बेसिस पे हेलीकॉप्टर्स आने लगे और उनको फूड प्रोवाइड करवाने लगे. All right, so Prashant found that large number of children had been orphaned. So and next thing Prashant saw कि there are so many children जो क्या है, orphaned है, अनाथ है. So he brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. So basically क्या किया प्रशांत ने, अब पहले तो क्या था
कि जो भी लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, जो ऑर्फन थे, राइट, उनको क्या किया, एक साथ इकट्ठा किया, एक पॉलीथीन शीट से ही कवर्ड देम, एंड विमेन को क्या किया, मोबिलाइज्ड कर दिया अलग अलग काम में कि वो फूड को प्रिपेयर करें, राइट। सो ये सारे काम में वो फूड प्रिपेयरिंग का काम विमेन्स करने लगी और बच्चे अंदर शिफ्ट कर दिए। एज द वीक पास, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द विमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। तो आफ्टर अ पॉइंट प्रशांत रियलाइज कि बच्चे और जो विमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में, बहुत ज़्यादा दुख में हो गई हैं। सो ही परसुएडेड द विमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ एंड फॉर द, सो ही डिसाइडेड कि एनजीओ ने एक प्रोग्राम निकाला था, तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो फूड प्रिपेयर करने का काम करने लग गई विमेन्स। तो वो इंडल्ज हो गई, राइट, किसी काम में वो इंडल्ज हो गई। और वैन वी इंडल्ज समथिंग, राइट, एंड सम वर्क, सो हम सारे जो ग्रीव्स वगैरह हैं वो क्या नॉर्मली हम भूल जाते हैं। तो वो भी इनके साथ सेम ऐसा ही हुआ, दैट्स वाई उनको कुछ काम दे दिया गया। And for the children organized sports event, he himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. So basically all boys love cricket. So in a similar way Prashant also loved cricket, so he organized a cricket match for children. So Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. So through these kind of things, Prashant ने सबको engaged कर दिया, busy कर दिया, ठीक है, with the helping of other people, other volunteers, right, other youth persons, कि अब जो widows हैं, जो भी childrens हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, तो जो भी उनके broken pieces and lives के वो अब settle हो जाएंगे. So the initial government plan was to set up institution for orphans and widows. So basically, as we all know that if something happen like that, तो कुछ गवर्नमेंट प्लान्स करती है, तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट प्लान किया गया फॉर ऑर्फन एंड विडोज के लिए थ्रू गवर्नमेंट. सो हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड एज इट वाज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. तो विद दिस देखो इंस्टीट्यूशन तो हो गया, बट बच्चे बिना माँ बाप के प्यार के रहेंगे, और जो विडोज हैं वो एक स्टिग्मा मीन्स एक कलंक और एक लोनलीनेस के साथ दे स्पेंड देयर लाइफ. But Prashant's groups believed orphans should be resettled in their own community itself. तो प्रशांत and his group members believe कि जो orphan है, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको resettled किया जाए हमारी ही community में. So possibly new foster families made up of childless widows and children without adult care. So basically उन्होंने क्या फॉर्म किया, एक फैमिली फॉर्म करी, जो भी चाइल्डलेस विडोज थी उनको बच्चे दे दिए गए. तो इससे क्या हुआ, उन बच्चों को पेरेंट्स का लव मिल जाएगा, राइट, और जो विडोज है वो लोनली भी नहीं रहेंगी. तो इट वॉज अ वेरी गुड डीड डिड बाय प्रशांत. सो इट इज 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own पेन. तो बेसिकली जो डिवास्टेशन है उसको 6 months कंप्लीट हो गए थे, एक सुपर साइक्लोन आ गया था. तो दिस टाइम जो भी वुंडेड स्पिरिट थी प्रशांत की, वो जो बहुत अंदर से आप इंजर्ड होते हो, जो तो और सब चीज़ें क्या था, हील्ड हो चुकी थी, सब कुछ फिनिश हो गया था. एवरीवन इज बेटर नाउ. सो हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक्स आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ एज. सो एवरीवन वाज हैप्पी देयर बिकॉज सब लोग ओवरकम कर चुके थे उस darkest hour of grief से. So hopefully you all have must understood this chapter very well. So thank you for watching. Stay safe.